व्हाट्स हैपनिंग? गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है आपको? वी हैव कंप्लीटेड होल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड की, है ना। हमने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी शुरू कर दिया, 12th का भी शुरू कर दिया। आज हम लोग कर रहे हैं पूरा पी ब्लॉक का रिवीजन। जल्दी से 1 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली विल डू अ रिवीजन। एंड वेयर आर वी एट? इन डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड पूरा हम लोग जो प्लान है हम लोग का। दिस इज द टाइम टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ दिस वीक। कहाँ, वेयर आर वी एट अभी राइट नाउ? होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, कहाँ है हम? 29 फरवरी। पी ब्लॉक ग्रुप 13 एंड 18 एनसीईआरटी के हम लोग जो है सवाल सॉल्व करेंगे। पी ब्लॉक यानी कि वही चीज ना, यू नो द ड्रिल। ग्रुप 13 to 18 मतलब 11th का 13 14 और 12th का 15 16 17 18। सुपर डुपर आदित्य, तीर्थराज, पूनम सिंह, लॉन्ग टाइम। हे सुल्ताना, हे धन्य दर्शनी, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। Shall we get started? Yeah. पहला सवाल शुरू करें। This is the timetable, by the way, what I'm going to do. The plan is still about March 16, and we'll figure out more things after that. What March 16 मतलब कि आधा महीना और, right? Approximately March 16 तक we'll finish up the whole syllabus, and then we'll see आगे क्या करना है। आपके जेई वाले दोस्तों का एग्जाम होगा, so we'll do some JEE focus session, then maybe एक जीत and all of that. If you want, if you're interested in giving JEE, you can check out the JEE channel for details. Let's start with the first question already. Discuss the pattern in variation. We are starting right off the bat. Pattern and variation in the oxidation states of boron to thallium, and carbon to lead. Yeah, what oxidation states do they show? I'm good, Puna. How are you doing? Long time. Yasin, Pranam. Compounds also in this session. What do you mean, Yasin? Can you elaborate your question? Good evening, Pampa. Hey, A. Ifam. Hello, hello, hello. Oh, अंकिता की क्लास अभी चल रही थी? I thought it got done. That's why I started this one. अंकिता की क्लास खत्म हो गई, right? Wait, I didn't check. I thought खत्म हो गई थी. Hold on. हाँ, खत्म तो हो गई है ना? I thought I started right after she finished. Oh, just now? Just now? All right. Cool. Great. सही है. Okay. Welcome. Decrease down the group. Okay, says A. Exactly. Right. So I'm gonna, club them together like this: boron, aluminum, and then gallium, indium, thallium, and then carbon, silicon, and then all these guys together. The reason why I put them together is, you know what happens, right? These guys, they show +3. These guys are +4. But here, +1 is more stable. Here, +2 is more stable because of the inert pair effect. Anyone want to tell me what exactly is this inert pair effect? क्या होता है inert pair effect? Well, here's the thing, right? Because जो है shielding खराब होती है और D और S block electrons की, तो जो S block electrons हैं सिर्फ वही निकल पाते हैं, और बाकी इन दे जो how does PB look like, or what does the general configuration of this? It is 1 2 3 and 4, P4, right? And what about this? It is P1 2 3. So yeah, you get one guy go and it's very difficult to get the others go. You get one guy go, there's one more here, वो चला जाता है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया गया एनसीईआरटी में, but the general idea is here, because of shielding of DNF block electrons, these guys and these guys have a lower oxidation state that's more stable. और practically आप लोग देख सकते हैं E naught values के साथ directly, ठीक है। The E naught values give you an idea. Now, अगर आप बात सोचें कि E naught कहाँ से आ गया, see you've got to see chemistry साथ में, physical, inorganic और organic सब कुछ साथ में लेके चलना जरूरी है। तो this idea of inorganic chemistry that says that, oh, you know what, E naught of Pb4 plus to Pb2 plus, this is going to be positive, but the opposite way is not going to be positive. Obviously, it's the reverse, right? This is going to be negative. Why? Because Pb4 plus is not very stable, Pb2 plus is more stable, ठीक है। Similarly, thallium का, indium का भी वही same idea है, inert pair effect. Yeah, exactly right. Thank you. Poor shielding. Okay. Bond making में contribute करता है. Thank you. Oh, nice to see you. So many inputs. Hey Tanu, hey Arnan. All right, Piyush, Snigdha, thank you for all your inputs. Yes, Devanshi, just got over right now. All right, cool. I did not notice. I had a session at 6:30. I just started. I did not realize that. But good to see all of you here. Look at the next question. Let's check out the second question. How can you explain higher stability of BCl3 as compared to TCl3? What do you think? Kind of related to the last question. I think we don't have to spend too much time on this. So the thing with inorganic chemistry questions is that they are your time savers. They're a lot like your bio questions. A lot like bio. You know the answers like right away, right? कुछ फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों में इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैकेनिज्म ये लगा वो लगा, थोड़ा कैलकुलेशन करो, बट इन बायो क्वेश्चन यू जस्ट नो द आंसर। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो नीट में काफी उस तरीके की ही है, यू सी एंड यू नो द आंसर। सेम आइडिया यहाँ पे भी देखो, इधर पे
+3 is more stable, यहाँ पे +1 is more stable. So TlCl3 not going to be stable. That's it. That's simple as that. Same idea, exactly same idea. Back bonding says Avinash. Oh, back bonding. अच्छा. Back bonding. अच्छा. Are you talking about BCl3 की stability? BCl3 में back bonding होती है. Is it possible for back bonding in BCl3? I don't know. I'm asking you. मुझे इतना I'm not that great at organic chemistry. Maybe you're better than me. So BCl3 में back bonding होती है क्या? BF3 में तो नहीं हो सकती because F doesn't have any D this thing, right? That's interesting. Yeah, I think absolutely right. Thank you. But I don't think there is too much back bonding का effect इसमें. BCl3 में नहीं है. I don't know. What do you think? आपको क्या लगता है? Is there back bonding in BCl3 or is it more relevant in B? Higher these things. Okay, highly oxidizing and back bonding. Tanu says okay. BF3 में back bonding. BF3 की BCl3 which has back bonding. Since we mentioned back bonding, it's not in your syllabus really, but since somebody mentioned, I was like back bonding. Okay. Sure. Boron is electron deficient, right? So it wants electrons. That's just what back bonding is in हमारे layman's terms में. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं होती है, BF3 में होने के चांसेस हैं. Sure. Okay. All right. ठीक है. Cool. Let's go on to the next one. Yeah. It's all right, Lavanya. It's all right. Dr. Ravindra ji, pranam. Prince, hello. Let's go to the next question. Yeah. Let's talk about the shapes of BF3 and BH4 minus. Figure out the hybridization of boron in both these species. Now, ये तो लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग का सेशन हो गया. और जब मैंने आपके साथ बॉन्डिंग की थी, मैंने आपको बताया भी था कि देखो टी ब्लॉक में कुछ चीजें कंपाउंड स्पेसिफिकली. अच्छा, यही यासीन पूछ रहे थे कंपाउंड्स है कि नहीं है. यासीन देखो, रिएक्शंस नहीं है बट कंपाउंड्स इस तरीके से आ सकते हैं. जैसे कि आपसे पूछा जाएगा ऑक्साइड एसिडिक है कि नहीं है, बेसिक है कि नहीं. दूसरी चीज पूछी जाएगी हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा. तो दिस इज फेयर गेम. अगर हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स वो सब नहीं आएगा. कूल, इसको ट्राई करते हैं. इट्स ऑल राइट लव. कैन यू ट्राई दिस? कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 एंड BH4 माइनस? ये वाले सवाल बहुत जल्दी करने वाले हैं. तुरंत वी कैन डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेरी क्विकली और बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. I know I usually say that quality is over quantity, but inorganic chemistry में quantity, dude, it's all about the quantity, and I mean that. I think it will actually benefit you to solve a lot of these different kind of questions. और अभी तो सिलेबस भी बहुत कम हो गया, तो the kind of things to ask questions from बहुत काफी लिमिटेड होगी. मतलब सेमी टाइप के सवाल आएंगे, not घिसे पेटे, I was going to say घिसे पेटे, but not घिसे पेटे really, but similar टाइप के सवाल आते रहेंगे. Yeah, sp2 and sp3. Okay, sp2 and sp3. Okay, lovely. I think all of you have got the idea, nail on the head. हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट ये होता है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड यू हैव टू काउंट लोन पेयर. दोनों काउंट करना है. लकीली देयर आर नो लोन पेयर ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स. देयर इज नो लोन पेयर. बोरॉन है ना, बेचारा बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, कहां होंगे लोन पेयर? सो योर लाइफ इज इजी. लोन पेयर नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इज नॉट रियली दैट रेलेवेंट इस क्वेश्चन में, बट जनरली hybridization का concept depends on the sum of both of these things. That gives you number of orbitals. So clearly, इसमें होंगे 3 ऑर्बिटल, इसमें होंगे 4 ऑर्बिटल. So this must be sp2. This can be sp3 or dsp2, right? But this has no meaning. dsp2 has no meaning here. So it is definitely sp2 and sp3 because d कहाँ से आ जाएगा, right? You all are absolutely right. बिल्कुल, the nail has been hit on the head. Thank you. BH4 minus is tetrahedral sp3. BH4 minus, I have a feeling a BF4 minus. BH4 minus का मतलब नहीं है. It should be BH4 minus. I think it should be BF4 minus. This is a typo because, yeah, I'm pretty confident this is a typo. I'm like, wait. While I was doing this, but let's check. Does the species exist? आपको क्या लगता है? This is weird, right? Does the species exist? BH4 minus? कहीं देखा है क्या आपने? Let's look it up. BH4 minus. What is BH4 minus? Boron hydride. Does it exist? देखते हैं. BH4 minus tetrahedral. Okay. BH4 boron. Does it exist क्या? Boron H4 minus. मैंने उसको नहीं सुना यार. NaBH4. ओ अच्छा, NaBH4 एग्जिस्ट करता है. ठीक है, BH4 माइनस भी एग्जिस्ट कर देता है. ठीक है भाई, कर देता है. BF4 minus I have seen. BH4 minus is interesting.
वही तो H कोऑर्डिनेट कैसे बनाएगा, पीयूष पूछ रहा है। वेल, इनऑर्गेनिक अजीब चीज है, आई गेस इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन इन लाइफ, है ना। BOH 44 माइनस दैट आई हैव सीन, राइट, वही तो बोरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड इज BOH थ्राइस। कहां गया ये, आई नो आपके सिलेबस में नहीं है, बट बोरिक एसिड इज BOH थ्राइस एंड यू गेट BOH 4 माइनस ऑल्सो, ये भी मिलता है। ठीक है, ठीक है भाई, एनसीईआरटी में है तीर्थराज, ठीक है, ग्रेट, आई टेक योर वर्ड फॉर इट, लेट्स मूव ऑन। बढ़िया, एनसीईआरटी में ही है ना, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। सॉरी सॉरी फॉर दैट ट्रिकरी। यार ये सवाल एनसीईआरटी से कर रहा हूं मैं, आई मीन इफ द मेमो रैंडम नहीं दिया गया आप लोगों को, दीज आर ऑल एनसीईआरटी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो यहाँ पे है सीधे एनसीईआरटी से ही है, जो होता है ना, मैं जो सच कहूंगा सच से और कुछ नहीं कहूंगा, ऑल ऑफ दैट, गीता पे कसम एंड ऑल ऑफ दैट, सो दिस इज ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, सो क्या करें। ठीक है, कूल, अगले सवाल पे चला जाए। यस, इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी गाइस, दिस इज नॉट अ मेड अप क्वेश्चन, आई वाज जस्ट मेसिंग विद यू कि भाई है कि नहीं, रियल है कि नहीं है। एनसीईआरटी से है तो भाई होगा, जरूर ही होगा। ठीक है, प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स एज न्यूट्रल, एसिडिक, अरे 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 अरे, वापस जाओ वापस जाओ, बैक बैक बैक, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब कभी हाँ कभी ना, बोथ वेज, राइट, स्विंग्स बोथ वेज। कार्बन मोनोऑक्साइड, B2O3, SiO2, CO2, Al2O3, PbO2 एंड Tl2O3। आर दीज बस दो है जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी रेस्ट ऑफ देम यू कैन फिगर आउट फ्रॉम जो बेसिक आइडिया जो आपको ऑलरेडी मालूम है। बाय बेसिक आई मीन इट कैन बी फिगर आउट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आप लॉजिक से ज्यादातर फिगर आउट कर सकते हो, दो में थोड़ी अचकन हो सकती है। सेकंड इज राइट सुटेबल केमिकल इक्वेशंस, नो नो, वी आर नॉट डूइंग दिस पार्ट, वी आर नॉट डूइंग सुटेबल केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। पानी डाल दो यार, पानी डाल दो, इज द इजी थिंग टू डू। या लावण्या, ऑलराइट, एस ब्लॉक डिलीटेड चैप्टर है, SS पूनम सिंह डज नॉट लाइक एस ब्लॉक, ऑलराइट, यस अश्विनी बिल्कुल सही, ओके, 4 सिग्मा 0 लोन पे, दैट्स व्हाई डेट, यस अविनाश आई एग्री, लॉजिक से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं अविनाश, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, 4 बॉन्ड्स हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अविनाश, आई लाइक दैट। ना, एम्फो बी, व्हाट इज ना, ओ एन इज न्यूट्रल, ऑलराइट, यस सर, है बोरिक एसिड प्रिपरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें बोरिक एसिड बनता है, एंड सुपर डुपर सिलेबस में नहीं है, बट कूल, थैंक्स। Al2O3 एम्फोटेरिक है, लवली, सुपर डुपर, good job, okay, acidic, this thing. So the general idea is as you go down the group, stuff tends to be more basic, okay, and the early ones could be acidic, especially P block. This is only P block, right? So with that idea, and this is like a random thing, like carbon monoxide neutral, because it is, what are you going to do, right? It's neutral. This was number one, that's a little random. Baki, these are kind of very doable by logic. I feel that this is, you know, लॉजिक से आप इस यहां तक जा सकते हो। दिस एम्फोटेरिक इज ऑल्सो लॉजिकल, राइट, ठीक है, नीचे के थोड़ा फिर दिस गाय इज लाइक व्हाई यू एम्फोटेरिक, व्हाई इज PbO2 एम्फोटेरिक, इट्स अ लिटिल रैंडम, क्योंकि लेड तो है भाई साहब मेटल, एंड इट्स स्टेबल ऑक्साइड ऑफ मेटल, बट इट्स एम्फोटेरिक तो है, सो इट इज नॉट जस्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक, ओके, PbO2 इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। अब पढ़ते हो ना कि एल्यूमिनियम जिंक दोनों एसिड बेस साथ रिएक्ट करता है, लेड भी है, टिन भी है, बट छोड़ो अभी बात नहीं करेंगे टिन और लेड की, बट या दिस एम्फोटेरिक, ठीक है, दिस Tl2O3 इज बेसिक। हाँ अश्विनी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इट टर्न्स आउट PbO2 इज नॉट बेसिक, इट्स एम्फोटेरिक, दैट्स द कैच, ठीक है। एनसीईआरटी में बीच में छुपी हुई चीजें, ये दोनों चीजें आर हिडन इन द मिडल ऑफ एनसीईआरटी रैंडमली, एंड इस पे जेई मेन पे भी सवाल आते हैं, मे बी नीट पे भी आ जाए, तो प्लीज बी केयरफुल, इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, मेक नोट्स, दिस ओनली वे टू रिमेंबर इट, यार दिस वन ऑफ द रैंडम थिंग्स जो याद करना मुश्किल है, तो लिख के याद करो। या लॉजिक हैज लेफ्ट द चैट, आई नो, द थिंग विद केमिस्ट्री इज दैट वी स्टडी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट, और प्रैक्टिकल चीजों के पीछे लॉजिक बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लाइक लॉजिक निकालने के लिए तुमको जो लिटरली मास्टर्स में लॉजिक पता चलेगा उसका, अच्छा ये फेज डायग्राम होता है, इसकी वजह से ये होता है, थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, अरे वाह, करने की वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। B2O3 इज एसिडिक, नो पीयूष, अच्छा, पीयूष इज सेइंग B2O3 बेसिक नहीं होगा, बोराक्स ग्लास एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक है ना, बोराक्स ग्लास में सोडियम भी तो होता है पीयूष, ओके, बोराक्स ग्लास, लेट्स लुक अप बोराक्स ग्लास फॉर पीयूष, व्हाट इज बोराक्स ग्लास, बोरेट ग्लास आई फाउंड,
कॉम्प्लेक्स, उसमें alkali ions, more complex action of alkali ions than silicate glasses. Borate glasses have major difference in optical properties. Okay. Borax glass is a mixture of, what is a mixture of borax glass? NaBO2 and B2O3. H4, H2B4O7 and B2O3, NaB2. I think it's because of NaBO2 that it's basic. Yeah, not because of B2O3. But I can check it up again if you want. मैं तो बस NCERT से देख के बता रहा हूँ. NCERT is, I mean, say, is acidic. So here's the deal, right? How do you know it's acidic? उसको पानी में डालो, if you get an acid, it's, you know, that thing. And also it has acid-base reactions, yeah? When you have B2O3, it reacts with NaOH and it forms metaborate. Metaborate का formula क्या है देखना पड़ेगा. I don't want to write the wrong thing. So we look at what is metaborate का formula. Metaborate formula. Oh, it's just NaBO2. That is metaborate. This is the basic compound, guys, that Piyush was pointing out. Piyush, it looks like you're preparing for advanced. Because ये सब चीजें is firmly NCERT, मतलब firmly is not a part of NEET or JEE Main. Yeah. ये deleted है अश्विनी, और ये नहीं पढ़ना है. लास्ट का 2 मिनट नहीं, लावण्या नहीं है, डरो मत, ये सब सिलेबस में नहीं है. पीयूष ने पूछा इसलिए मैंने उसका बस आंसर दिया. ठीक है. B2O3 loose acid, yes, exactly. Boric acid, borax, HbO2. Okay, thank you. Additional syllabus. Singer from Goa. I like your name. In JD Lee, singer from Goa. You can find a lot more questions on JD Lee. If you're focused JE Advanced, watch me on the JE channel. Oh, I'll give you the links. I haven't given you the links to my videos in general. Here you go. Here you go. I'm going to pin this comment. Students ask me about how do I get better at this subtopic, that topic. All my videos are over here. Okay. Group 14 elements. They exhibit the state of +4 only. +2 and +4. Form these ions, form these ions. Now here, NCERT, I think, messed up a little bit. I don't know. Let's see. Let's see. रमेश, आप कहां से हो मुझे पहले बताओ. अगर आप टाइम पास करोगे तो टाइम आउट में चले जाओगे. अगर आप जो है फोकस करोगे, सवाल जवाब करोगे, और मोस्ट वेलकम टू स्टिक अराउंड ऑन दिस चैट. 11th का है एंड 12th का फुल पी ब्लॉक हमारे सिलेबस में है क्या सर? प्लीज रिस्पॉन्स. आई एम कंफ्यूज्ड. लावण्या, नहीं यार, पूरा सिलेबस में नहीं है. नीट के सिलेबस में तो नहीं है. इफ यू हैव सम अदर बोर्ड, सम अदर एग्जाम यू गिविंग, मे बी नीट के सिलेबस में नहीं है. इसका आंसर होगा बी. ओके. व्हाई नॉट डी? बी तो ठीक है, आई एग्री, बी इज करेक्ट, बट डी भी तो सही होगा. EB2+, EB4+, इट्स अनस्टेबल बट फॉर्म तो करता है. फॉर्म तो करता है. लेड एसिड बैटरीज ब्रो. PbO2 इज देयर लेड एसिड बैटरी में, राइट? यस, तीर्थराज, बहुत ज्यादा डिलीटेड है, बहुत ज्यादा डिलीटेड, बट फिर भी सवाल उतने ही आए जेई मेन में. इनफैक्ट इट हैड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक and inorganic, and physical कम था. If you go with the percentage of stuff, I think this was about 30%. ये कम था. Physical इतना था. This was about 35. This was about 35. Approximately इतना था. और in some papers it was close to 38, 32 and 30. And the other way around also. But physical कम था. JEE main की मैं बात कर रहा हूँ. JEE main का split. I feel that both of these should be correct. What do you think? मेरे हिसाब से ये दोनों correct होने चाहिए. B and D. Not just B. Which is weird. Board में भी आए हैं. अच्छा, very interesting. Super duper. So that was the weird thing. This is just from NCERT, not from exemplar. Exemplar में ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं. इसमें ऐसा तो नहीं है. होना नहीं चाहिए, बट अभी आ गया तो क्या करें, है ना? नहीं नहीं, क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा लावण्या? यू स्टडी व्हाट इज इन योर सिलेबस. डोंट स्टडी एक्स्ट्रा रैंडम थिंग्स. नहीं भाई, सारा मत पढ़ो. काहे रिस्क? कोई रिस्क नहीं है. देखो, जेई मेन का भी एग्जाम गया, उसमें कोई चीज सिलेबस से बाहर नहीं आई थी. जो लोग इंटरनेट पे रो रहे हैं उनकी बात इग्नोर करो. आई हैव सॉल्व्ड ऑल द पेपर्स एज एंड व्हेन दे केम आउट, एंड वी हैव अ टीम ऑफ पीपल. आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर दिस. वी हैव अ मैसिव ह्यूज टीम एट आकाश दिल्ली में, जिन्होंने सारे सवाल हमारे साथ लाइव. मैं जेई मेन की कहानी की बात कर रहा हूँ. जब 5 दिन वो एग्जाम था, दे वुड चेक द क्वेश्चन, तुरंत गिव अ सॉल्यूशन. दैट्स हाउ इट गो लाइव विद इन हाफ एन आवर. और यहाँ बैंगलोर में भी टीम की 3-4, 5, between 3 to 5 people always they're doing this. The conclusion from that is there was maybe one question पूरे शिफ्ट में जो आउट ऑफ सिलेबस था. बाकी कोई सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आया था. तो जो सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ो. ठीक है? हैव कॉन्फिडेंस एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ. सो प्लीज फोकस ऑन जो सिलेबस में वही पढ़ो. अगले सवाल पे चलते हैं.
Rationalize the given statements and give chemical reactions. Oh wow, ये वाला इंटरेस्टिंग है. आई थिंक ये भी ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो, ऑल्दो लगेगा ये सिलेबस से बाहर है, बट इसको भी हम लोग आंसर कर सकते हैं यूज्ड ऑन बेस्ड ऑन थिंग वी ऑलरेडी डन. हाँ, एग्जाम्पलर करना है रीमर टीमन, जेई सेशन पे आ जाओ, जेई चैनल पे आ जाओ, वी आर डूइंग एग्जाम्पलर देयर. देखो, इफ यू वांट टू फोकस ऑन नीट, दिस शुड बी सफिशिएंट. अगर ज्यादा करना है जेई चैनल पे आ जाओ, आई टीच यही सेम चीज, सेम चैप्टर आई एम डूइंग एग्जाम्पलर देयर, आई एम डूइंग यहाँ पे एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन. ठीक है, अगर और करना है वहां कम ऑन द जेई चैनल, चेक दो आउट. ओके, इसका क्या करोगे आंसर? दैट्स ग्रेट मैन, नीट स्टूडेंट्स, गुड टू नो. यादव साहब, कौन सी ब्रांच से हो? इंजीनियरिंग. मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है. इसका आंसर बताओ प्लीज. I did chemical engineering and then I was doing a PhD in materials engineering, which I dropped out of. But yeah, so I have a background of chemicals and materials. मतलब inorganic मेरी life में बहुत भरा पड़ा है. But the fun parts of inorganic, not these parts. Rationalize the given statements and give chemical reactions. Lead chloride reacts with chlorine to give PbCl4. I mean, what's the idea, right? You know that lead has both of these states, +2 and +4. +2 ज्यादा stable है. So again, from the basis of inert pair effect, हम इसको solve कर सकते हैं. You may argue कि ये syllabus में नहीं है, but do you really need this to be in the syllabus? This is very, आराम से इसको guess कर सकते हो क्यों ये होता है. And it's highly unstable towards heat because the same reason, it's not very stable. तो पहला तो ये रिएक्शन हो गया, जैसे तुम हीट करोगे, it goes back and gives you this. Yeah, it gives you this and this. This is a +2 state, more stable. That's what I was talking about, more stable +2 state. ठीक है, all right. And PbI4 क्यों नहीं बनता है? Same reason यार. Pb2+ is more stable, which means कि Pb4+ is strongly oxidizing. अगर कोई चीज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब इट इटसेल्फ वांट्स टू गेट रिड्यूस्ड. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है I- का, राइट? I- इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग. भाई उसको I- में नहीं रहना है, उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है. सो इट विल रिड्यूस समथिंग एल्स, और वो जो है जाना चाहता है जीरो स्टेट पे. पहले तो जीरो एंड देन विल सी कैन आल्सो गो टू हायर स्टेट, बट वो जीरो स्टेट में लाइक्स बीइंग इन द जीरो स्टेट. बिकॉज ऑफ दिस इट फॉर्म्स PbI2 एंड नॉट PbI4. ठीक है, कूल. शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. विभूति, आई एम एवरीवेयर, आई एम इन द ईथर. मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, राइट? तो आई वर्क आउट ऑफ द बायजूस ऑफिस इन बैंगलोर. Aakash Digital, that's what we call it, the Aakash BYJU'S team. I'm a part of the Aakash BYJU'S team in the Bangalore office. So I'm not at a branch. मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ right now. So there are studios in the office, and there also we have some home setups. Ankita also just took a class, so we are all in the same team. Yeah. Okay. Cool. +2 more stable, +2 not exactly. Steric crowding not the reason. Praveen, sure. एक चीज के बहुत, Praveen, it's good to see you. Praveen, aren't you from the J channel? That's great. That's good to hear you. You are right. आपने बिल्कुल सही चीज बोली. वो भी कारण है, right? This concept of steric crowding, it could be the answer, but the thing is कि is PbI4 ionic or covalent? If PbI4 is covalent, then your reason is correct. If it is ionic, then it is not. आप समझ रहे हो? You following what I'm saying? If Pb4 is covalent, then the crowding concept is right. But if it is ionic, it's not, right? Why is it not an ionic? Ionic में तो पानी सराउंड करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, right? So is PbI4, it doesn't exist. So हम लोग इसकी बात करेंगे, फायदा नहीं. But anyway, we'll talk about this बाद में, ठीक है? Out of this discussion right now, we'll talk about this on, you ping me on IT Chem, we can chat about it more over there. On I think it should be covalent, right? Because Pb4+ is very small ion, very high charge, anion is big. उस idea से we can argue कि it's probably going to be covalent, and what your reason is, right? But again, not a part of it. Next question: can PCl5 act as an oxidizing as well as reducing agent? Now we are on to group 15 to 18. 13 and 14 are done. बताइए. Good to know, Piyush. Good to know. All right. I agree. The steric factor is a strong factor there. Thank you for that. Aditya, thank you. That's exactly the syllabus जो आदित्य ने बोला.
सुपर डुपर कॉलेजेस रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया? सुपर डुपर व्हाट डू यू मीन? नीट में तो नीट के थ्रू ही होता है ना. हाउ डू रजिस्टर विदाउट नीट स्कोर्स? हाउ डू दैट वर्क? आर यू टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस क्या? थैंक्स पीयूष, लवली. बहुत जल्दी से पीयूष आंसर देते हुए. देखो ऑलरेडी फॉस्फोरस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है विच इज +5, तो और कहां ऊपर जाएगा, है ना. So it can only go down. If it goes down, it is getting reduced. If it is getting reduced, it wants to oxidize something else. If it wants to oxidize something else, it must be a good oxidizing agent, but a bad reducing agent, because it cannot really oxidize itself further to anything more than +5. समझ में आया? फिर से बोलूं, फॉस्फोरस ऑलरेडी +5 में है, वो नीचे जा सकता है. अगर वो नीचे जाएगा तो मतलब कि किसी और चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा. सो इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग, नॉट अ गुड रिड्यूसिंग, इट कैन नॉट बी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- एंड HCO3-. दिस आई विल हेल्प यू बिकॉज ये जो राइट वाला की तरह. अब आप पूछोगे कि हाउ इज दिस रेलेवेंट टू नीट, ये सब्जेक्टिव सवाल है. द रीजन इज स्टूडेंट स्टडी दिस बट दे आर कंफ्यूज विद दिस. आई कैन आर्ग्यू दैट दिस इज वेरी रेलेवेंट फ्रॉम बॉन्डिंग. ठीक है. How would I go ahead and draw this? CO3 2- ये आपने देखा होगा. This is there in bonding. You have seen this a lot of times, I guess, right? This is a resonance hybrid. By the way, 2-3 पॉइंट्स है रेजोनेंस के बारे में that I want to reiterate over here. कि the resonance hybrid is the structure that's always present. वो जो अलग अलग 3 स्ट्रक्चर है ना, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते. It's the hybrid somewhere in the middle वाला चीज that is what exists. ठीक है. The resonance hybrids, ये जो रेजोनेंस के अलग अलग 3-4 स्ट्रक्चर आते हैं, those are not real. This is the real structure. ठीक है. एक दो लाइन दी है एनसीईआरटी में, प्लीज पढ़ लेना अबाउट दिस रेजोनेंस का आइडिया. हाउ डू आई ड्रॉ HCO3-? कैसे ड्रॉ करूं इसको? CO3 2- का ओके 3 कूल एग्जैक्टली. या आई लाइक व्हाट पीयूष इज सेइंग. इट हैज 3 bonds that are all in resonance with each other. They have like intermediate bond lengths and all. The difference in HCO3- is one of them becomes OH, because जो भी acid होता है ना, how does it behave like an acid? This bond is weak. Even if you see in H2SO4 or anything else like that, right? उनका स्ट्रक्चर यही होता है. ये बॉन्ड टूटता है तभी एसिड निकलता है. इवन इन स्ट्रॉन्ग एसिड, टू टेक अ वीक एसिड लाइक से H3PO2, राइट? इसका भी एग्जैक्टली वैसा ही है. well, not exactly वैसा ही, that's exaggerating, right? 1 2 3 4 5. I have a feeling कि this is a coordinate bond. H3PO2, H2H3PO2. Yeah, this should work. This should work. Or I think this should be a double bond. This is better to draw this as double. So either way, even whether it's a strong acid or a weak acid, an acid is behave like an acid जब एक OH bond होता है वहां पे. ठीक है. और OH bond जब weak होता है तो it breaks. So HCO3- interesting looks like this. Okay, so it has these two guys over here. So you could ask a question in NEET कि अच्छा इसमें कितने bonds हैं जिसकी bond length is lower than expected? I can ask a question. HCO3- में how many bonds are lower than expected? The answer here is 2. For CO3 2-, the answer would be 3. ठीक है. Hybrid is not hypothetical, Ashwini. Ashwini, hybrid is a proof कि it exists. Like तुम जब energy उसकी देखोगे ना, how do you find out if something actually exists or not? You run it through some machine. और normally मशीन में क्या होता है, तुम लोग एनर्जी मेजर कर सकते हो. एनर्जी कैसे मेजर करते हो? यूजुअली लाइट या रेडिएशन और समथिंग से कुछ एक्साइट करते हो, इंटरेक्ट्स एंड समथिंग हैपेंस. बहुत क्रूड वे से बोल रहा हूँ. मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिससे आप चेक कर सकते हो कि अच्छा इस बॉन्ड ये किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकता है, ये बॉन्ड उसका रेजोनेंस क्या है. उससे तुम देखोगे अच्छा इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी क्या होगी. सो दिस फ्रॉम दैट यू कैन गेट कि अच्छा देयर विल बी सम पीक्स इन अ ग्राफ, और दीस पीक्स इन अ ग्राफ विल करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर बॉन्ड स्ट्रेंथ्स एंड हेंस बॉन्ड लेंथ. यही बोल रहा था कि पूरा जो है केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया. देन यू गेट कि अच्छा CO हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. ठीक है. ज्यादा कहानी होगी क्या? काम किया था थोड़ा इसलिए याद आ गया, सिंस आपने पूछा तो बता दिया. ठीक है. मानव, आई लव यू टू, बट तुम यार पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पास क्यों कर रहे हो? लेट्स गो. हाइब्रिड इज नॉट हाइपोथेटिकल. PYQ एम्स का पीयूष देखो भाई. PYQ एम्स का, एंड ऑल्सो इट इज देयर इन NCERT. हाँ, एम्स में तो है, NCERT में भी है. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. थैंक यू देवांशी. ओके, दिस इज द रीजन आई गॉट दिस क्वेश्चन फॉर यू. हे प्रियांशु,
Knowing the electron gain enthalpy values of oxygen giving O minus and oxygen giving 2 oxygen 2 minus as these values, how can you account for the formation of a large number of oxides having O2 minus species and not O minus? देखो, O to O minus, that's good, negative value. O minus to O2 minus, that's highly positive. So how is it that O2 minus exists and not this? क्यों? Why? And कुछ lattice enthalpy के बारे में hint दिया हुआ है. Consider lattice enthalpy factor, the enthalpy factor in the formation of compounds. Please बताइए. वो बंदा जो टाइम पास कर रहा था मानव, that was your one and only warning. I hope you understood that. Good evening, Adil. What do you think? क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है? O2 minus forms a inert gas, an inert gas, neon, noble gas configuration, which is great. ठीक है, that is great. But भाई ये तो बहुत डेल्टा एच इज ओवरऑल इज पॉजिटिव 1 + 2. अगर आप देखो डेल्टा एच बहुत पॉजिटिव है तो क्यों होता है? बिकॉज देर आर 2 फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले. ओके, वन इज इलेक्ट्रॉन्स निकालना. दिस इज एनर्जी इनपुट. द सेकेंड प्रोसेस इज लैटिस एंथैल्पी, विच इज कि जब ये बॉन्ड बन जाए, कुछ पॉजिटिव आयन और ऑक्साइड आयन जब कंबाइन करे, इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाती है, दैट बैलेंसेस इट आउट. So this lattice is very negative. And here is a small bit of क्या बोलते हैं इसको, a disclaimer. ठीक है, lattice enthalpy को you can define it in 2 different ways. कभी कभी lattice enthalpy is की energy required to break the lattice. कभी कभी ऐसा बोल सकते हो कि lattice enthalpy is the energy that is released and the bonds are formed when the lattice is formed. तो देख लेना कि कौन सा वाला जो है आप लोग रेफर कर रहे हो in the question, what is it talking about. When it comes to P block and this kind of a question, then we are talking about energy released on forming a lattice. ठीक है, that's what we're talking about right now. All right, incomplete octet. You are right, Piyush. बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं. All right, bro. Bye, Priyanshu. How do I put you in a timeout? There, timeout. Anybody doing time pass will not be tolerated, especially if you're disrupting the class. जितना time pass करना है करो. But if you're going to disrupt anybody, and if you're going to target individuals and bully them, bhai, zero tolerance. ठीक है. Yes, Lavanya, thank you. So question number. Titra, this is the 9th question. I think, I'm not sure यार. ये number मुझे गलत लग रहा है. It's not 3.9. It is from group 15 to 18. एक बार देख लेना. ठीक है. You can just like look it up. I'll give you the notes. Don't worry. Description में मैं notes डाल दूँ इसके. Why are halogens strong oxidizing agents? जल्दी जल्दी बहुत ढेर सारे सवाल कर रहे हैं हम लोग, लगाए रहो बढ़िया स्पीड. Why are halogens strong oxidizing agents? What do you think? इसका आंसर lies in the configuration again, the P5 configuration. That's point number 1. Point number 2 is that they have very high electron gain enthalpy. They really like accepting electrons. Yeah, I know. Electron gain enthalpy chlorine की fluorine से ज़्यादा होती है. ये सब बहुत जगह पढ़ चुके हैं. Chlorine is -349, fluorine is -328, etc., etc., etc. ठीक है? That's the main reason. And electronegativity भी high है. That is point number 3. Point number 1 was 2p5 configuration. Right? It accepting electron, which means on being reduced, it forms 2p6, which is awesome, which is great, right? Pehla idea, which is kind of related to this high electron gain enthalpy. ये दोनों चीजें related है. High electronegativity, मतलब दो अगर bonds है, अगर एक bond है between two elements, right? It tends to pull electrons toward itself. So it's like, हाँ, भी है ही मेरे पास तो पूरा ही मुझे दे दो. And this is last one is interesting. It has a low delta H dissociation. मतलब अगर bond है, उसको तोड़ना थोड़ा आसान है. It has a weird order. I don't know if you know this order specifically, right? Is that question coming up later? पढ़ने दो. I have a feeling the question is coming up later, so I will not spoil it for you. नहीं, शायद वो वाला नहीं है क्या? है. It's coming up next. Okay, I will not spoil it for you.
We'll talk about this in a later question. In the next episode, we'll talk about this. Okay. So the reduction potentials are in this order: fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Why is it this order? Because this guy is the strongest. And if you see the table, it's about 2.37 or something is the E naught value of F2, half F2 to F minus. Okay, this value specifically. Standard reduction potential, highly positive. Exactly, Piyush. Thank you. Thank you, Piyush. Yes. So a lot of reasons. Exactly, Ashwini. Why low delta H? Ashwini, great question. We'll talk about that another one. Low delta H or dissociation, we'll talk about that जल्दी. अगले सवाल में बात करेंगे अश्विनी. Next question. Shall we move on to the next one? All good? Are we going too quickly? Let me know. I thought we could do a lot of questions in inorganic. ठीक है? अगर कोई डाउट है, कुछ anything you want me to slow down on, please let me know. अगला सवाल देखते हैं. This one's fascinating. Why are halogens colored? FCl, Bri. I would, yeah, all right. I think we need to say F2, Cl2, Br2, and I2. But sure, I get what you're saying, Devanshi. You're right. All right, good, good, good. यार लोग हाय हेलो हमसे किया करो यार, लोग बहुत अजीब लोग हो इंटरनेट पे. ठीक है. Why are halogens colored? Please tell me why are halogens colored? What do you think? Halogens color होता है क्या? हो रहा है क्या? हाँ यार, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता था गैस. हाँ, ब्रोमीन तो ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन वेपर्स ब्रोमीन. आयोडीन भी वायलेट होता है. इनफैक्ट फ्लोरीन भी येलो कलर का होता है. ये देखो, ये सब है कलर्स. एंड इंटरेस्टिंगली यू नोटिस अ ट्रेंड. ये नीचे एज यू गो डाउन द ग्रुप यू नोटिस अ वंडरफुल ट्रेंड. व्हाट इज दिस ट्रेंड? व्हाट इज द ट्रेंड? इसकी इफ यू लुक एट दिस इज लाइक विबग्योर, राइट, सॉर्ट ऑफ. You basically say that भाई साहब this has a low frequency and ऊपर जो है high, ये this has a high frequency, this has a low frequency, rather low wavelength and high wavelength. Yes, no, maybe. Homo lumo transfer. Spelling lumo. Piyush, I'll help you out there. Highest occupied. Wonderful, huh? Molecular orbital. Hence, homo. Lowest unoccupied. स्पेलिंग हमने गड़बड़ कर दी, बट भावना को समझो. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. लूमो, लूमोस, लूमोस से लूमो. किसी को वो हैरी पॉटर देखा है? लूमोस इज हाउ यू लाइट स्टफ अप. होमो एंड लूमो. This is same as conduction band and valence band. Conduction band, valence band जो पढ़ाते हैं ना 10th standard में, वही चीजें हैं, but this is molecular orbital theory से निकाला गया. सेम ही चीज है. Due to absorption of radiation in visible region. ठीक है लावण्या, but क्यों? डी ट्रांजिशन. जे साहब, डी ट्रांजिशन कहां से हो गया? एक बात थोड़ा सोचो. तीसरा just saying डी ट्रांजिशन. How bro? How डी ट्रांजिशन? 2p5 is the configuration of these guys. D कहां से आया? By the way, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ अब्सॉर्ब हो रहा है. जो अब्सॉर्ब हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा. ठीक है. So these are complementary colors of those absorbed. Okay. DD transition? Why? I don't know. People are saying DD transition. मुझे नहीं मालूम. Let's look it up. DD transition in halogens. I have not heard of this, but हो सकता है. बहुत चीजें हो सकती हैं. In fact, the first question is, when I look at DD transition, why are halogens colored? Even though they have no d orbitals, transition of electrons respond for colored species of transition methods. होमो लूमो बिल्कुल सही था. प्रियांशु ने बिल्कुल सही बताया. सॉरी, पीयूष ने बिल्कुल सही बताया. देयर इज नो डीडी. ठीक है. आप लोग देखो, टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मग करने में रिस्क होता है. लॉजिक समझना इज ऑलवेज गुड. दिस डी ट्रांजिशन विल हैपन व्हेन देयर आर डी इलेक्ट्रॉन्स. नो, वेयर आर डी इलेक्ट्रॉन्स? हाउ आर यू गाइस सेइंग डी ट्रांजिशन? कम ऑन. ओके, सो व्हाट, कहां पे ट्रांजिशन क्या हो रहा है? देखो, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. यू हैव 2p5, राइट? दिस इलेक्ट्रॉन कैन गेट एक्साइटेड. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ओके, दैट्स द लॉजिक. कूल.
नाउ थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ये जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में था n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, 4, 5. अब अगर छोटा n वैल्यू है, if you are going from whatever to n equal to 2, then you would say that E is proportional to 1 by 4 into E naught, right? Or E is equal to, actually not even proportional. और अगर ये मैं लेता हूं n equal to 4, then you would say that E is equal to 1 by 4 square, ये 2 square है specifically, right? Into E naught. अब इन दोनों में लैम्डा की वैल्यू ज्यादा किसमें होगी? मैंने लिख तो दिया कॉन्स्टेंटली लैम्डा लार्ज या स्मॉल लैम्डा, बट डू यू सी दैट स्मॉल लैम्डा मींस हाई वेवलेंथ, हाई ई मींस हाई न्यू मींस लो लैम्डा. तो अगर हम लोग, एंड ऑब्वियसली दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, बट दिस जस्ट टू गेट एन आइडिया कि एज यू ग्रो अप एंड अप एंड अप, एनर्जी बहुत कम चाहिए अब्सॉर्ब करने के लिए टू जंप अप, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू गेट एक्साइटेड. नीचे वाले में एनर्जी ज्यादा चाहिए फॉर इट टू गेट एक्साइटेड. व्हाट डज दिस मीन? सो रेडिएशन अब्सॉर्ब तो कर रहा है, एंड ये वाला अब्सॉर्ब्स हाई एनर्जी, ये वाला अब्सॉर्ब्स लो एनर्जी. समझ में आ रहा है? अगर अब्सॉर्ब किया लो एनर्जी तो एमिट करेगा या रिफ्लेक्ट, सॉरी एमिट रिफ्लेक्ट, इन दिस केस लेट्स जस्ट कॉल इट एमिट. दिस विल एमिट हाई एनर्जी, एंड दिस इज अब्सॉर्ब्ड हाई एनर्जी, इट विल एमिट लो एनर्जी, एंड हेंस ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो वेवलेंथ और हाई वेवलेंथ. मैंने एग्जैक्टली उल्टा लिख दिया, मैंने एक्सप्लेन ठीक किया था, एग्जैक्टली उल्टा लिख दिया यहां पे. रुको, नहीं सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है. अब्सॉर्ब्स हाई एनर्जी, अब्सॉर्ब्स लो एनर्जी, हाँ सही सही लिखा है. अब्सॉर्ब्स हाई एनर्जी बिकॉज दिस इज लो, दिस इज लाइक ये वाला n equal to 1, दिस इज लाइक, और n equal to 2 स्पेसिफिकली, राइट? n equal to 2 की तरह, दिस इज लाइक n equal to 6 और समथिंग. ठीक है, कूल, समझ में आ गया? अश्विनी, आपने सुना टाटा सॉल्ट के एड में देखा था, पीयूष लवली मैन, आई लव दिस, कोऑर्डिनेशन में होता है CFT. अश्विनी, अश्विनी डाउन द ग्रुप में कम एनर्जी लगनी चाहिए. एग्जैक्टली कम एनर्जी अब्सॉर्ब हुई तो बाकी लाइट इज अवे टू गो. ओके, थिंक अबाउट लाइक दिस. इफ आई हैव से 10, ओके, नाउ हाई में कम लगनी चाहिए, इसमें ले लिया 2 बचा 8, इसने ले लिया जो है 6 बचा 4. सो दिस 2 अब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है, और ये एमिट हुआ है. तो अगर मैं रेशियो देखूं, दिस इज वायलेट, दिस इज येलो, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं बोल रहा हूं. वायलेट इज इंडिगो, वायलेट इज इंडिगो, वायलेट इज आयोडीन, एंड येलो इज फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा. समझ में आया अश्वनी? कूल. आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि काफी बार ये फिजिक्स का ही आइडिया है, बट स्टूडेंट समहाउ लाइक इसको जो है ठीक से इसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते हैं. अब्सॉर्ब जो हो रहा है कम एनर्जी और एमिट होगा ज्यादा एनर्जी. अगर ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, लाइक इन द लोअर जो एन वैल्यूज हैं, तो जो है हायर एनर्जी आपको दिखेगा, इसलिए वायलेट दिखता है इसमें. ठीक है, कूल. ओके, आपने पूछा सुपर. ओके, ओके, ऑलराइट, स्वीट अश्विन, गुड गुड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स गेट, अब सब आसान है. नाउ एवरीथिंग एल्स इज वेरी इजी, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन वेरी इजी. व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फास्फोरस इन दीस कंपाउंड? बहुत सिंपल है, 1 मिनट में कर दो. नीट स्टूडेंट्स, ओके ग्रेट, बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हैं इसको. अरे हरे कृष्णा, नो इशू व्हाटसोएवर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. मुझे चेक करना चाहिए था, मैंने सेशन शुरू कर दिया, उसके बाद स्टूडेंट से मुझे बोला कि अभी सेशन चल रहा है आपका, नहीं अभी सेशन खत्म हुआ है. खैर, नो नो, आई शुड हैव चेक. इट्स एब्सोल्युटली फाइन अंकिता. दैट वाज अंकिता सेइंग कि सॉरी का थोड़ा एक्सटेंड हो गया. लाइक नो, एब्सोल्युटली भाई, बायो पढ़ाओ, बायो वाज ऑसम. दिस टीचर्स आर अमेजिंग. ठीक है, सो
Can we do this very quickly? Within a minute's time, I think you should be able to do these. इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है. Thank you, Piyush. Thank you. Plus, 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 plus. Three check करो. Check 3, Piyush. Rest are good. Please check 3. Ashwini, please check the third one. देखो यार, मेटल के साथ फॉस्फोरस का पॉजिटिव कैसे हो सकता है? इसका तो नेगेटिव होना चाहिए ना. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द नंबर. विद द मेटल फॉस्फोरस हैज टू बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव. बाकी तो ठीक है यार, देख लेंगे, है ना. इजीएस्ट, लवली. तो दिस व्हाट आई डू. फर्स्ट स्टेप, राइट, आराम से राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन. नेक्स्ट स्टेप विल सब्स्टिट्यूट. फर्स्ट स्टेप सब लिख लो. नेक्स्ट स्टेप में करते हैं सब्स्टिट्यूट. 3 मतलब +6 दूसरी तरफ ले गया ना. 3 मतलब +3 मतलब -3 ऑपोजिट साइड. 3Cl +3. 3Ca -6 हो गया तो -3 होगा. इसका जो है 8. ये भाई साहब हो गया इधर -3. ये 3F कहां गया? इधर ही होगा. ऑक्सीजन इज 2. ठीक है. सो द आंसर्स आर गोइंग टू बी 3 -3 +5 +5. ठीक है. यू टुक मॉड्यूलस. वाह अश्विनी, मॉड्यूलस ले लिया. जोक मारता है. यू स्टूडेंट्स गाइस. देवांशी, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट. सॉरी और बोलने जरूरत नहीं. इट्स ओके. गुड जॉब. -1.5. डूपर साहब, आई थिंक आपने थोड़ा ज्यादा ही डिवाइड कर लिया. आई थिंक जस्ट दैट विल डू. विल बी गुड. अगला सवाल पे चला जाए. ऑलमोस्ट डन. We have some wonderful last question, I think, for the नहीं last question. और कितने सवाल है? I have कहाँ है? We have 1 2. Where are we at? 1 2 3. Just 2-3 सवाल बाकी हैं and time भी 10 मिनट बाकी है. We'll manage to complete this आराम से. Arrange the following in the order of property indicated for each set. बताइए जरा. ये एक्स्ट्रा 6 जो आ गया उसको मैं तुरंत डिलीट करता हूं. आप जरा इसका बताइए, ऑर्डर बताइए आप मुझे चैट में. Where did this 6 come from? I think I have this keyboard that just got weirdly typed and has a 6 over there. That's bugging me. Okay, चला गया 6. Let's go. टा 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 टा. पीयूष, ये वाला मुश्किल है. पहला वाला थोड़ा मुश्किल है. That's my hint. First one is a little bit difficult. अच्छा, but I think you got right, पीयूष. You just have आपको सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़िए पीयूष. You've got it right, but आप थोड़ा पढ़िए. Ashwini, NEET, I didn't understand. I want the order. I want you to increase the order. I want you to like mention क्या है order. 2 HI HBr. हाँ, 2 वाला सिंपल है. गुड जॉब. 1 में Cl F2 Br2 I2. दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि स्मॉलेस्ट फर्स्ट. आई थिंक यू गाइस हैव फिगर्ड आउट द एक्सेप्शन एंड ऑल ऑफ दैट. सबसे छोटा आयोडीन का होगा. अश्विनी ही पूछ रहे थे ना. अश्विनी, यू आर आस्किंग मी व्हाई इज डेल्टा एच डिसोसिएशन स्मॉल. देखो, आयोडीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. ओके, सो इट्स लाइक चिल है भाई. आई कैन ब्रेक दीज बॉन्ड्स. इट्स वेरी इजी टू ब्रेक बिकॉज़ इट्स अ बिग मॉलिक्यूल. ठीक है. इसका डिसोसिएशन होगा ज्यादा. नाउ what is weird is you'd expect it, because of this logic, you'll expect it to be this. But this guy right here, it does something weird. It's like, boss, nahi hona hai mere se. Yeah, it's got a very, very small size and there's a high electron repulsion, which is because of which in dono ki delta H of dissociation is really small. And बाकी के भी कम ही है because of the same reason. Electron repulsion की वजह से सबके are lower than other stuff. Yeah, बाकी जो if you have something else that forms a N2 or something, उससे तो कम ही है, काफी कम है. ठीक है. So इसका आंसर, the first one का आंसर is this right here. Is this okay? Yeah, this is the answer for the first part right here. Second part is very straightforward. Acidic strength मतलब कि क्या, अगर bond weak है, ये तो बता चुका हूं. अगर H और X का बॉन्ड, ये दिस बॉन्ड इज वीक, इट ब्रेक्स इजीली. वीक क्यों होगा? अगर I का साइज बहुत बड़ा हो गया. आंसर, अगर X का साइज बहुत बड़ा हो गया तो लाइक ब्रो, आई एम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यू. सो HI इज गोइंग टू बी वीक.
sorry, HI is going to be extremely strong. What am I saying? The bond is going to be weak. So very, very, very acidic. Okay. I hope my आवाज आ रही है. Went back and did mess up the mic. Okay, did not. Okay, cool. Ashwini, neat. Okay, good job. Yes. मुझे कीबोर्ड में लेस देन ग्रेटर नहीं मिले. पीयूष ओके. Bro. You guys are awesome. Okay, cool. ठीक है. बेस स्ट्रेंथ के बारे में क्या करें ये जरा बताओ. लास्ट वाला बेस स्ट्रेंथ के बारे में. Any doubt on this? 1 and 2 is okay. So we have solved 1, we've solved 2. What about 3? What's the idea behind base strength? जितना weak bond उतना weak, उतना strong acid. ठीक है. बेस का क्या करें? बेस में ये है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू गो आउट. वो फ्रीली अवेलेबल कब होगा, कब नहीं होगा? Now there are two ideas to this. You could argue as you go down the group, जो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, it is easy to take away. That would be valid for a ionization enthalpy वाला scene. But यहाँ पे these are bonded. Okay, these are bonded things. So what is happening is all of these H guys are pushing electrons onto them. But these guys are pretty large. And because they are large, they don't really want to, give away electrons so much. अगर ज़्यादा electrons already हैं, there is ineffective shielding, so the electrons are not very freely available to go away. They like forming bonds, right? But they're not free to go away as such. And ये थोड़ा अजीब है. This is like a little bit weird to understand. If you know it, that's great. But to internalize this can be a little weird, right? क्योंकि your logic would be कि ionization enthalpy of bismuth will be more than that of Sb, more than arsenic, more of phosphorus, more than nitrogen. For sure, we can check that also. लोग भी check कर लेते हैं. That being said, अगर ionization enthalpy ज़्यादा है, तब भी ये base का property is different from this. Okay, so please don't get confused between ionization enthalpy and this base वाला idea. I know, right? I know, Aditya. I know it's a little bit random. I agree. I'm just trying to confuse you further by showing you ionization enthalpy values. कहाँ है ये nitrogen? इधर देखो. I'll show you the values, and which is gonna make sure that you understand कि भाई you can't mug करने में थोड़ा हमेशा risk रहता है. Sources, window capture, MSH, periodic table. All right, दिख रही है periodic table? Not yet. दिख रही है periodic? Not yet. दिख रही है periodic table? Yeah. So look at this. Look at these values. Right on top of my head, you have nitrogen at 1400. थोड़ा छोटा हो गया. Okay. Now it is on my just on my shoulder. Okay. Cool. So nitrogen 1400, phosphorus 1000, and arsenic is 947. Antimony is 847, 834. Bismuth is 703. So ionization enthalpy is low, right? मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है. But we are talking about एक electron physically निकालना. That's not what a base is. This is not behaving like a base. Although you could argue कि 2 electron निकल गए तो base हो गया, ठीक है. But we are talking about compounds being formed. So वो electron जा चुका है, जो भी हो सकता है. Now compounds are formed. Okay. Now because of this, bismuth का देखो 700 है, मतलब it is close to that of कहाँ गया 700. देखो magnesium जैसा है. It is just like magnesium. Magnesium on the other hand also 700. ठीक है. Why am I showing you this? I'm showing you this so that you don't mug and you try and understand कि base का property has to do with electron pair. Okay, what is the base that gives electron pair and not one electron जो ionization enthalpy का है? NEET, I am repeating it right now. Yeah, P block weird. सर ये समझ नहीं आया, समझ नहीं आया. Okay, here is another way to look at it. Here's another way to look at it, right? You can go ahead and put it in water. Once you put it in water, what you get is NH4OH in this guy's case, and BIOH and जो भी चीज है. Then you check Kb value. जिसका Kb हुआ सबसे ज़्यादा, that's going to be a strong base. Does that make sense? Right? Theoretically, I know it's like weird to comprehend why is it a strong base, but does this idea make sense?
अगर मैं पानी में डालूं and I get something, right? I get this sort of a compound, and I go ahead and test its basicity. ठीक है? And I get this. If you get a high Kb value, then it works. Is it okay? कोई डाउट है तो बोलो. Waiting for the chat to move on. I think, wait, this is the last question. I think I have one more question. Yeah, I have one more question for you. Just one easy, straightforward question. Yeah. Yeah. All right, Nidhi. Cool. So here is another way to look at it, right? The atom, it has a very, very high Z effect. Z value, not Z effective, Z value. Positive charge बहुत ज्यादा है उसका. Nuclear charge. So although एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 2 electrons away for a base is not happening. ठीक है? Yeah. Just because of the same reason of this whole inert pair effect, you say that +1 is more stable than +3. Yeah. I know this is a little bit hard. The best way to look at it is पानी में डालो. If you get a base and you get a high Kb value, that's good. I know it is a little bit random. I'll try and look for better reasons, but I looked it up a little bit और मुझे भी इससे ज़्यादा convincing चीज नहीं मिली. But if I find something, I'll get back to you on when are we meeting next? We're meeting next on Saturday. I'll get back to you on this. ठीक है? Cool. Let's do the last question for today. I'll look up JD Lee. And I'll get back to you. What did Piyush say? ऐसा सोच सकते हैं BIS3 जल्दी reduce हो जाएगा, उसका conjugate base more stable होता है acid. अच्छा, yeah, exactly, Piyush. That's what. So what you are saying is the experimental way of doing it, which I agree with. That's the easiest way. भाई experiment होता है, accept करो. If you try and look at the logic behind it, so theory में लिखाएगी nuclear charge ज्यादा है, size बड़ा है, but density electrons की कम है. अब ये सब चीजें इतना abstract है, I don't know. They don't make too much sense to me, so I don't go along. Anyway, go down that line. Which of the following does not exist? आसान हो गया ये वाला सवाल, बताओ. इसके बाद एक और है, second last question. Sorry. Yeah. तीर्थराज. Bismuth में ज्यादा protons है ना, as compared to nitrogen. Nitrogen has 7 protons. Bismuth has a lot more protons. And उसकी shielding भी कम है. But bitch, dude, trust me, just mug अभी के लिए. If I get a better reasoning, I'll come back to you. अभी के लिए mug. ठीक है? Yeah. Yes, Ashwini. बिल्कुल right. Absolutely right. तीर्थराज, what do you think? This one's easy? Yeah, Ashwini. बहुत simple सा सवाल. While you do the next question, I'm going to open up JD Lee and see if I can find something convincing in among the. Tomorrow भी class है. NEET, tomorrow I have a class on the JE channel. Day after is when I'll have a class on the NEET channel. फिर से. Very easy. Thank you. Here is a breather. कुछ मुश्किल सवाल के बाद एक आसान सवाल आ गया. Last question for the day. Give the formula and describe the structure of a noble gas species which is isostructural with ICl4 minus, IBr2 minus, BrO3 minus. Now this question, sir, you will be set to tackle any question that comes your way in NEET on P block elements. इसको try करो. बिल्कुल right. NEET, निधि, देवांशी, पंपा, आदित्य, पीयूष, अश्विनी, तीर्थराज, absolutely right. Where did Radhika go? And the other usual suspects. Try this out while we explore the basicity of group 13 elements. I don't remember any book that I've had to read as much as I've had to open JD Lee while teaching you guys, because inorganic, bro, it is what it is. हम लोग ये लोग hydrides ना specifically. Okay, try halide, hydrides. BH4 minus के बारे में पूरा राम कथा यहाँ लिखी हुई है. Oh wow. BH4 minus is a ligand. Nice to know. Tetrahydroborate, amphoteric behavior. अब बताओ इसका सवाल का जवाब. I'll give you a minute to try and solve this. What's the starting point here? What is the concept of isostructural? पहले इसका structural तो बनाओ. First point, make structure. मतलब कितने sigma bonds, कितने lone pair. Write that down. Okay.
सिग्मा बॉन्ड है इसके 4, 2 और 3, करेक्ट, 4, 2 एंड 3। लोन पेयर बचे इसके कितने, ICl4 माइनस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हुए और एक और आ गया, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। IBr2 माइनस मतलब 2 हुए 5 और 6, 5 बचे इलेक्ट्रॉन, एक एक एक्स्ट्रा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, सो बच गए 3 लोन पेयर। BrO3 माइनस, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। BrO3 माइनस के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज इसमें तो कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक इट इज 0, आई एम नॉट सो श्योर। अरे कहां गया, ये अटक गया लग रहा है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस वन, लेट्स सी दिस। आई थिंक इट शुड बी 0, बट लेट्स सी। आई लाइक इट, अश्विनी एंड सुपर डुपर, यार तुम्हें जल्दी बता दिया, मैं तो ढूंढ रहा था, थोड़ा गिव यू दिस क्वेश्चन एंड बैठ के ढूंढूंगा मैं इधर। करो करो, गो अहेड। कॉम्प्लेक्सेस, बोरॉन, मोनो हाइलाइट, हाइलाइट, कंपाउंड, बोरॉन हाइड्राइड्स। हाँ, आई फीलिंग मैं गलत ग्रुप देख रहा हूँ, या मैं गलत ग्रुप देख रहा था, नाइट्रोजन देखना था, NH3 कोई बोलता भी नहीं है कि मैं बोरॉन नहीं देखना है, नाइट्रोजन देखना है। Got a lot of information about all of these guys. Structure of hydrides, मिल गया hydrides। Jesus, bro, I feel like we're going down a rabbit hole. Okay, XeO3 हो गया सवाल, तब तक आप सबने कर दिया, गुड जॉब एवरीबॉडी। ओके, ICl4 कैसे बनाएंगे हम लोग, 4 and 2, राइट, सो लेट्स ड्रॉ ICl4 सबसे पहले। This is your ICl4, okay, so square planar with 2 guys, this is exactly the same as XeF4, not O4, sorry, XeF4, ठीक है, गुड जॉब। सेकेंड वाला भी आप लोगों ने सही पकड़ लिया, टेक्निकली दिस शुड ऑल्सो बी स्क्वायर प्लेनार, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक I3 माइनस, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, ठीक है, बट नोबल गैस स्पीशीज के बारे में बोला है, नोबल गैस में हमको बनाना पड़ेगा XeF2 वाला, बढ़िया। Now the last one is interesting, BrO3 minus. BrO3 minus is very interesting. So कैसे, what do we do with BrO3 guys? Super tetra ही है, okay. BrO3 minus में how many lone pair and bond pair, कोई बता सकता है? Can you tell me this? Lone pair कितने हैं, bond pair तो clear है, it's 3. Lone pair होगा नहीं होगा BrO3 minus में, थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। Yeah, I agree, tetrahedral है, ठीक है, we can get that from data, but how do we go from here? Where do we go from here? Can you help me with that? Bro, there's just one line in this amazing book also. Their ability to act as electron donors using the lone pair of electrons for coordinate bond formation decreases. क्यों नहीं लिखा है? खैर, how many lone pairs on this? Lone pair 1 says Nidhi. Okay, let's see. How one lone pair? Structure क्या होगा? थोड़ा स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा। ब्रोमीन हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड पहले बना देते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, बचेगा इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, it has 3 more electron. What do I do with the 3 electrons? I have only 3 more electrons. No, bromine में तो I have 7, no, totally. So I have 5 more electrons. 5 इलेक्ट्रॉन में से give 1 to this guy, 1 to this guy. बचे कितने, 3 नहीं, with some bad math. Okay, 3, 4 इलेक्ट्रॉन से, राइट, 3 बना दिए तो 4 बचे, नहीं 5 बचे। Guys, I'm a little confused now. 4, 3, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, माइनस साइन कहां से आ गया? ओ, तो यहां पे सब अच्छा, so now there's 6, 7, 8 electrons instead of 7 electrons, now there are 8 electrons, so there's 1 lone pair and 3 bond pairs. Did you guys get मैंने कैसे ड्रॉ किया? cool. peroxide नहीं पीयूष peroxide मत बनाओ, this is the structure, ठीक है, don't make peroxides. Okay, let's talk about BrO3 एक बार फिर से, because there is some confusion about that, right? Br
O3 minus. It's supposed to have 7 electrons. It has plus 1 electron because of this minus on bromine. ठीक है, cool. Now BrO3 ऑक्सीजन को सेशिएट होने में हम लोग को डबल बॉन्ड सब पे बनाने पड़ेंगे. ठीक है, सो वी डू दैट. सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस, Br and 3 डबल बॉन्ड्स. ठीक है, बचे 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे 2, ये हो गया. होल थिंग बिकॉज माइनस. दिस माइनस चार्ज इज नॉट ऑन द ऑक्सीजन, इट कुड बी, बट माइनस चार्ज इज बिकॉज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ब्रोमीन पे. नॉर्मली हम लोग माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे डाल देते हैं. द कंपाउंड्स आर XeF4, XeO2 एंड XeO3. ठीक है, पेरोक्साइड नहीं होगा, पेरोक्साइड नहीं होगा. O माइनस भी नहीं होगा पीयूष. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. O माइनस भी नहीं होगा, आई फील. डू यू थिंक इट्स O माइनस और इज इट Oh yeah, okay. Between oxygen, okay. I get it. The double bond is pay. I get it. I get why double bond is pay नहीं होगा because it's more electronegative. Oxygen is more electronegative than Br. Okay, cool. Thank you, Piyush. All right. Now to talk about the hydrides वाली चीज. If you guys are आपको कहीं जाना है तो you can carry on. I'm done with the session. Hydrides की हम लोग जो बात कर रहे थे, I'll just talk about that for another minute. I have found a little bit more information, although I don't know how helpful it's going to be. Hydrides वाला कहाँ गया वो? Hydrides. Where's hydrides? Color ये वाला. Okay, cool. So the question was, in hydrides का increasing base strength. So it's saying that the stability decreases. Okay, down the group stability decreases. It also says reducing power increases. Okay, also replacing H with other atoms decreases. Last point लिखा है ability to act as electron donors decreases. रीजनिंग कुछ नहीं लिखा है, बस ये 4 पॉइंट लिखे हैं. भगवान भरोसे है रीजनिंग. More oxidizing, yeah, that's it, bro. That is literally it. Ammonium salt, CNL. Yeah. After that, it goes on to explain bond energy in table 14.6. Bond energy इसकी कम है. Bond energy falls. हमने कर लिया PhD इस पे, ठीक है. Even in JD Lee, there's just one line. This is more basic. Okay, that's it. Oh, happy leap day. Let's leap up. Okay, thank you all for your time. Amazing Thursday. If I find something more, I'll come to you with it. But I have not found anything more other than the fact that they're strong reducing agents and they react with solution of metal ions to give you phosphides, etc. And they flame. और बहुत कहानियां लिखी हैं, but nothing about why it is a stronger base, other than the thing we already discussed. So no, we are not breaking off H, Ashwini. H is not breaking off. That is acid. H breaking off is acid, Ashwini. ये lone pair is easier as compared to say bismuth hydride. ठीक है, bismuth hydride से comparison में this is easier. That's all I say. ठीक है. All right, cool. Thank you everybody for your time, and I'll see you around on Thursday. Thursday को हम लोग क्या करने वाले हैं? Oh yeah, you want to see the timetable? Thursday को we are going to talk about Thursday आज है. Saturday को we're going to talk about solutions and kinetics. If you want to check out more questions on P block, Saturday को हम लोग करेंगे exemplar JE channel पे, right? Tomorrow we're going to do electro and this thing on JE. If you guys want to attend, otherwise as usual हम लोग मिलेंगे solutions kinetics के साथ on Saturday. Now we're starting off with 12th grade topics. थोड़ा सा organic भी करेंगे हम लोग अगले हफ्ते. Organic देखो अगले हफ्ते. See you around. See you. Bye. I didn't understand your question, Super Duper. I'm not sure what you mean by registration, how registration exactly works college के बारे में. Especially in medical colleges, registration कैसे काम करता है is not something I know. Maybe you should check with Ankita. Okay, see you. Bye. Bye.